हाय सी फाइनलिस्ट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी फाइनल लॉ का एक चैप्टर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कि बात करता है ऐसी कंपनीज के बारे में जो इनकॉर्पोरेट तो हुई हैं आउटसाइड इंडिया बट दे हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड दे आल्सो कंडक्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये तीनों कंडीशंस म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं। इसका मतलब कि तीनों कंडीशंस साथ में पूरी होनी चाहिए। पहली कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया, दूसरी कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इंडिया में, और तीसरी कि वो कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करती हुई होनी चाहिए इंडिया में। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि अगर कोई कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और सिर्फ उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, तो क्या उसको फॉरेन कंपनी मानना है या नहीं मानना है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जब तक वो कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट नहीं करेगी इंडिया में, तब तक वो फॉरेन कंपनी नहीं मानी जाएगी। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 42 में। Foreign company means any company or a body corporate incorporated outside India which has a place of business in India by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and conducts any kind of business activity in India or any other manner. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इंडिया में, वो कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करती हुई होनी चाहिए इंडिया में, वो खुद भी कर सकता है, अपने एजेंट के थ्रू भी करवा सकता है, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिजिकली मतलब कि उसका कोई फैक्ट्री है या फिर कोई ब्रांच ऑफिस है इंडिया में, और इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे वो सिर्फ वेब बेस्ड सर्विसेज दे रहा है तो हम इसको कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड में। इलेक्ट्रॉनिक मोड डिफाइंड है रूल्स में। इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड where the main server is installed in India or not, including but not limited to। इसका क्या मतलब है कि जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव लिस्ट है। इसके अलावा भी कोई एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में कवर कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसके मेन सर्वर्स इंडिया में इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज करते हैं इस चीज़ के लिए भी कि उसके मेन सर्वर्स इंडिया के बाहर हैं, तो बताइए फॉरेन कंपनी बनेगा या नहीं। हाँ, तब भी बन जाएगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है business to business and business to consumer transactions, data interchange and other digital supply transactions, offering to accept deposits or inviting deposits or accepting deposits or subscriptions in security in India or from citizens of India। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, ना कि रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट की जो आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कब मिलती है? जब आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट हो। Next is financial settlements, web-based marketing, advisory and transactional services, database services and products, supply chain management, online services such as telemarketing, telecommuting, telemedicine, education and information research, and all related data communication services, whether conducted by email, mobile devices, social media, क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन और अदरवाइज। तो इसे हम याद कैसे रखने वाले हैं? बीडी फैक्ट्स इसका निमोनिक है। बी फॉर बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस, डी फॉर डिपॉजिट्स एंड इनवाइटिंग डिपॉजिट्स, एफ फॉर फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, ए फॉर एडवाइजरी एंड ट्रांजैक्शनल सर्विसेज, सी फॉर कम्युनिकेशन सर्विसेज, टी फॉर टेलीमार्केटिंग, टेलीकम्यूटिंग एंड टेलीमेडिसिन, एस फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसी रूल में एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है। For the purpose of this clause, electronic-based offering of securities, subscription thereof, or listing of securities in the International Financial Services Centers set up under Section 18 of SEZ Act 2005 shall not be construed as electronic mode। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और वो अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करवा रही है IFSC में, और बाद में वो क्या करेगी, यही सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को ऑफर करेगी फॉर सब्सक्रिप्शन, तो इस एक्टिविटी को हमको इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन में कवर नहीं करना है। और जो इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन में ही कवर नहीं होगी तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं बनेगा इंडिया में, और जब प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं बनेगा इंडिया में तो वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में भी कवर नहीं हो। नेक्स्ट इज सेक्शन 379, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज। फॉलोइंग सेक्शन शैल अप्लाई टू ऑल फॉरेन कंपनीज। सेक्शन 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386 एंड 392 एंड 393। तो ये जो 9 सेक्शंस है वो सारी फॉरेन कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल फॉरेन कंपनीज भी होती हैं जिसके ऊपर पूरा चैप्टर 22 लगता है और कंपनीज एक्ट पे पूरा एप्लीकेबल होता है। ऐसी कौन सी कंपनीज होती हैं, पढ़ लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ होल चैप्टर 22 एंड अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट टू फॉरेन कंपनीज where not less than 50% of the paid up share capital, whether equity or preference or partly equity or partly preference of a foreign company incorporated outside India is held by one or more citizens of India or one or more companies or body corporates incorporated in India or
one or more citizens of India and one or more companies or body corporates incorporated in India, whether singly or in aggregate, such foreign company shall comply with the provisions of Chapter 22 and such other provisions of this Act as may be prescribed with regard to the business carried on by it in India as if it were a company incorporated in India. तो अगर किसी फॉरेन कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस 50% या उससे ज्यादा सिटीजन्स ऑफ इंडिया ने होल्ड किया हुआ है या फिर किसी ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट ने होल्ड किया हुआ है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है या उन दोनों ने मिलकर होल्ड किया है, तो उस फॉरेन कंपनी को चैप्टर 22 एंड अदर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ उसके इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस पे। तो इस प्रोविजन में कवर होने के लिए कंपनी को पहले फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में कवर होना पड़ेगा। वो तीनों कंडीशंस म्यूचुअली इंक्लूसिव जो थी उनको सेटिस्फाई करने के बाद ही हम चेक करेंगे कि उसका पेड अप शेयर कैपिटल सिटीजन्स ऑफ इंडिया या फिर बॉडी कॉर्पोरेट ने हेल्ड किया हुआ है या नहीं 50% से ज्यादा। तो पहले उसको फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में कवर होना मस्ट है। अब पढ़ते हैं सेक्शन 380 डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनीज। Every foreign company shall, within 30 days of establishment of its place of business in India, deliver to the registrar for registration the following documents. जैसे फॉरेन कंपनी अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश कर लेती है इंडिया में, उसके विद इन 30 डेज उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को सबमिट करने फॉर रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट इज a certified copy of the charter, statutes or memorandum and articles of the company or other instrument constituting or defining the constitution of the company. If the instrument is not in the English language, a certified translation thereof in the English language. कंपनी का MOA और AOA सबमिट करना है और अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसका एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन भी उसके साथ सबमिट करना है। नेक्स्ट इज 2 एड्रेसेस हमको सबमिट करने हैं, फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया विच इज डीम्ड टू बी इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। Next is the particulars of opening and closing of a place of business in India on earlier occasion or occasion. अगर इंडिया में पहले कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन या क्लोज किया है तो फिर उसकी भी डिटेल्स आपको सबमिट करनी है। नेक्स्ट इज अ लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी की ये फॉलोइंग डिटेल्स हमको सबमिट करनी है। पर्सनल नेम एंड सरनेम इन फुल, एनी फॉर्मर नेम और सरनेम इन फुल, father's name or mother's name and spouse's name, date of birth, residential address, nationality. If the present nationality is not the nationality of origin, his nationality of origin shall also be submitted. His passport number, date of issue and country of issue, PAN number, occupation, whether directorship in any other Indian company, तो उसका director identification number, name and sin of the company, other directorship or directorships held by him, membership number in case of secretary and email ID of that person. Next is the name and address or the names and addresses of one or more persons resident in India authorized to accept on behalf of the company service of processes and any other notices or other documents required to be served on the company. फॉरेन कंपनी ऐसे पर्सन और पर्सन्स का नेम रजिस्ट्रार को सबमिट करेगी और उनके एड्रेसेस जिसके ऊपर अगर कोई नोटिस या डॉक्यूमेंट ट्रिब्यूनल सर्व करती है तो ऐसा माना जाएगा कि वो फॉरेन कंपनी के ऊपर ड्यूली सर्व कर दिए गए हैं, वो पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड होंगे फॉरेन कंपनी से। Declaration that none of the directors of the company or authorized representative in India has ever been convicted or debarred from formation of companies and management in India or abroad. कंपनी फॉरेन कंपनी को एक डिक्लेरेशन देना है कि उसका कोई भी डायरेक्टर या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कभी भी कॉन्विक्ट नहीं किया गया है वेदर इन इंडिया और अब्रॉड, या फिर उसको रोका नहीं गया है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज और मैनेजमेंट इन इंडिया और अब्रॉड। एंड लास्ट इज एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अगर रजिस्ट्रार कोई और डॉक्यूमेंट मांग रहा है या फिर नोटिफिकेशन में प्रिस्क्राइब्ड है तो वो भी हमें सबमिट करना है। Next is above information shall be filed with the registrar having jurisdiction over New Delhi within 30 days of establishment of its place of business in India in form FC1 along with the prescribed fees. ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि न्यू दिल्ली के ऊपर जिस रजिस्ट्रार का जुरिडिक्शन है हमको उसी को अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। भले ही आपका प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में है, चंडीगढ़ में है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करने हैं? इन न्यू दिल्ली वाले रजिस्ट्रार में within 30 days of establishment of its place of business in India in form FC1.
The application shall also be supported with an attested copy of approval of RBI under the FEMA Act or regulations, and also from other regulators, if any, for establishment of a place of business in India, or a declaration from the authorized representative of such foreign company that no such approval is required. अगर आरबीआई का या फिर किसी अदर रेगुलेटर का अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो उसकी भी एक अटेस्टेड कॉपी हमको सबमिट करनी है रजिस्ट्रार को फॉर रजिस्ट्रेशन, या फिर अगर ऐसी किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐसा डिक्लेरेशन देगा कि ऐसी किसी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है. If any foreign company ceases to have a place of business in India, it shall forthwith give a notice of the fact to the registrar, and from the date on which such notice is so given, the obligation of the company to deliver any document to the registrar shall cease, provided it has no other place of business in India. What does it mean? That a foreign company shall immediately inform the registrar that it has ceases to have a place of business in India, and from that date the foreign company shall not be under any obligation to deliver any document to the registrar, provided it has no other place of business in India. If there is any other place of business in India of that foreign company, it will be under an obligation to deliver such documents to the registrar. Next is, every foreign company existing at the commencement of the Companies Act 2013, which has not delivered to the registrar the documents and particulars specified in section 592(1) of the Companies Act 1956, it shall continue to be subject to the obligations to deliver those documents and particulars in accordance with Companies Act 1956. अगर ऐसी कोई भी कंपनी है जो फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में कवर हुई थी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, then that foreign company shall be liable to provide any such documents to the registrar under the Companies Act 1956 only, and would not be bounded by the provisions of the Companies Act 2013. The next is, any alteration in the documents delivered to the registrar under section 380, the foreign company shall within 30 days of such alteration deliver to the registrar a return containing the particulars of such alteration in the form FC2 along with the prescribed fees. जैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट जो डिलीवर किया गया है रजिस्ट्रार को बाय द फॉरेन कंपनी उसमें कोई ऑल्ट्रेशन होता है, वैसे ही विद इन 30 डेज के अंदर अंदर उस फॉरेन कंपनी को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है जो भी ऑल्ट्रेशन हुए हैं अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस. क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कंपनी के एमओए में चेंज हो रहा है, एओ में चेंज हो रहा है, उसके डायरेक्टर्स में कोई चेंज हो रहा है, उनकी डिटेल्स में कोई चेंजेस हो रहे हैं, उसके कोई नया प्लेस ऑफ बिजनेस उसने ओपन किया है या कोई सीज हुआ है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो ये सारी डिटेल्स रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी. नेक्स्ट सेक्शन इज 381 अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी. Every foreign company shall, in every calendar year, make out a balance sheet and a profit and loss account in such form containing such particulars, including or having attached or annexed thereto such documents as may be prescribed, and deliver a copy of those documents to the registrar. तो सेक्शन 381 क्या कहता है कि फॉरेन कंपनी को अपने हर कैलेंडर ईयर में एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और उसके साथ जो भी अनेक्शर्स होते हैं वो सब कुछ रजिस्ट्रार को सबमिट करना है. Every foreign company shall prepare financial statements of its Indian business operations in accordance with Schedule 3 or as near thereto as possible for each financial year, including the documents that are required to be annexed should be in accordance with Chapter 9, and the documents relating to copies of latest consolidated financial statements of the parent foreign company as submitted by it to the prescribed authority in the country of its incorporation under the applicable laws there. इसका मतलब कि फॉरेन कंपनी जो अपने इंडियन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होने चाहिए और उसके साथ ही वो डॉक्यूमेंट्स देगी इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 9, और उसको साथ के साथ सबमिट करना एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इसकी पेरेंट एंटिटी बनाएगी, इंक्लूडिंग ऑल द एसोसिएट जॉइंट वेंचर्स एंड सब्सिडियरी कंपनीज. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन दी हुई है. Financial year in relation to any company or a body corporate means the period ending on 31st day of March every year and where it has been incorporated on or after the first day of January of a year, the period ending on the 31st day of March of the following year, in respect whereof financial statement of the company or body corporate is made out. So we know that the financial year as per Companies Act 2013 means a period starting from 1st April and ending on 31st March of the subsequent year. लेकिन अगर मान लो कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट ही 1 जनवरी या उसके बाद हुई है तो उसका फाइनेंशियल ईयर 3 महीने का तो होगा नहीं,
तो इसलिए उसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, नेक्स्ट 31 मार्च को, जो सब्सिक्वेंट ईयर आएगा। तो इसका एक फाइनेंशियल ईयर कितने टर्म पीरियड का बन जाएगा, 15 मंथ्स का, ना कि 12 मंथ्स का। Next is, provided that we're a company or body corporate which is holding company or a subsidiary or associate company of a company incorporated outside India and is required to follow a different financial year for consolidation of its accounts outside India, the central government may, on an application made by that company or a body corporate in such form and manner as may be prescribed, allow any period as its financial year, whether or not that period is a year. तो अगर कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है जिसकी पेरेंट एंटिटी कोई दूसरा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, तो वो फॉरेन कंपनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन दे सकती है कि इस पीरियड को उसका फाइनेंशियल ईयर माना जाए। जरूरी नहीं है कि उसका फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का होना चाहिए, वो किसी भी टर्म पीरियड का हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करे तो। A foreign company having its place of business in India may not necessarily follow a financial year ending on 31st day of March every year, provided it has obtained the requisite approvals from the central government from the same. ये वही चीज कह रहा है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी चाहे तो अपना फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च के अलावा किसी और डेट पे क्लोज कर सकती है, लेकिन उसको उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। If any of the specified documents are not in the English language, a certified translation thereof in the English language shall be annexed. तो अगर कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है उसका डॉक्यूमेंट, जैसे एमओ है, एओ है, या फिर जो भी उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है रजिस्ट्रार को, वो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसका एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन भी सबमिट करना है। Every foreign company shall send to the registrar, along with the documents required to be delivered to him, a copy of a list in Form FC3 of all places of business established by the company in India as at the date with reference to which the balance sheet referred to in section 381(1) is made. तो एक फॉर्म FC3 फाइल करना है फॉरेन कंपनी को रजिस्ट्रार के पास, जिसमें वो सारे अपने प्लेस ऑफ बिजनेस जितने भी इंडिया में है वो सब डिस्क्लोज करेगा। Next is, according to Companies Registration of Foreign Companies Rules 2014, further every company shall, along with the financial statement required to be filed with the registrar, attach thereto the following documents, namely a statement of related party transaction, a statement of repatriation of profits, a statement of transfer of funds including dividends if any. तो जो भी फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रार को अपने डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करिए, उसके साथ साथ उसको ये 3 डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट फाइल करना कंपलसरी है: related party transactions, repatriation of profits and transfer of funds including dividend. Next is, all these documents shall be delivered to the registrar within a period of 6 months from the close of the financial year of the foreign company to which the documents relate, provided that the registrar may, for any special reason and on an application made in writing by the foreign company concerned, extend the period by a period not exceeding 3 months. तो जो भी फॉरेन कंपनी को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं रजिस्ट्रार को, वो विद इन 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कर देगा, लेकिन रजिस्ट्रार अगर चाहे तो ये पीरियड 3 महीने से एक्सटेंड कर सकता है अगर फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देती है फॉर एनी स्पेशल रीजन। Every foreign company shall get its accounts pertaining to the Indian business operations prepared in accordance with section 381(1) and rules thereunder shall be audited by a practicing chartered accountant in India or a firm or LLP of practicing chartered accountants. तो जो फॉरेन कंपनी के इंडियन बिजनेस ऑपरेशन है, जो इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसका ऑडिट करवाना है फॉरेन कंपनी को बाय चार्टर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसिंग इन इंडिया या फिर LLP ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। The provisions of Chapter 10, Audit and Auditors, and rules made thereunder as far as applicable shall apply mutatis mutandis to a foreign company. तो जो भी provisions है Chapter 10 के वो एक foreign company पे भी applicable होंगे। Next is Section 382, Display of Name etc. of a foreign company. Every foreign company shall conspicuously exhibit on the outside of every office or place where it carries on business in India the name of the company and the country in which it is incorporated in letters easily legible in English characters and also in the characters of the language or one of the languages in general use in the locality in which the office or place is situated. तो हर फॉरेन कंपनी को जहाँ पे भी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, अपने ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगाना है जिसके अंदर वो अपना डिस्क्लोज करेगा नेम ऑफ द कंपनी एंड द कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, और ये दोनों इन्फॉर्मेशन उसे देनी है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में और दूसरा जो लैंग्वेज जनरल यूज हो रही है जहाँ पे वो प्लेस ऑफ बिजनेस है फॉरेन कंपनी का।
Next is cause the name of the company and the country in which the company is incorporated to be stated in legible English characters in all business letters, billheads, and letter paper, and in all notices and other official publications of the company. दोनों जो इन्फॉर्मेशन है नेम ऑफ द कंपनी एंड द कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, ये सारे इन्फॉर्मेशन कंपनी के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे भी होने चाहिए. नेक्स्ट इज इफ द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, cause notice of that fact to be stated in every prospectus issued and in all business letters, billheads, letter papers, notices, advertisements, and other official publications of the company in legible English characters, and to be conspicuously exhibited on outside of every office or place where it carries on business in India in legible English characters, and also in legible characters of the language or one of the languages in general use of the locality in which the office or place is situated. तो अगर फॉरेन कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो ये फैक्ट फॉरेन कंपनी के सारे ऑफिशियल पब्लिकेशंस पे प्रिंट होगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज में और दूसरा जो उस लोकेलिटी की लोकल लैंग्वेज है उसमें. Next is section 383, service on foreign company. Any process, notice or other document required to be served on a foreign company shall be deemed to be sufficiently served if addressed to any person whose name and address have been delivered to the registrar under section 380 and left at or sent by post to the address which has been so delivered to the registrar or by electronic mode. इसका मतलब कि फॉरेन कंपनी को अगर कोई भी नोटिस देना है ट्रिब्यूनल को या फिर किसी और कोर्ट को, कोई नोटिस देना है, कोई डॉक्यूमेंट सर्व करवाना है, तो ये माना जाएगा कि वो उस फॉरेन कंपनी को सफिशिएंटली सर्व कर दिया है अगर हम किसी ऐसे इंसान को वो नोटिस या डॉक्यूमेंट डिलीवर कर देते हैं जिसका नाम और एड्रेस हमने रजिस्ट्रार को दिया है अंडर सेक्शन 380. हम उसको कैसे नोटिस और डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? या तो हम खुद जाके उसको दे सकते हैं उसके घर या ऑफिस पे, या फिर हम उसको पोस्ट के थ्रू सेंड करवा सकते हैं, या फिर हम उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू नोटिस सर्व करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज सेक्शन 384, डिबेंचर्स, एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड देयर इंस्पेक्शन. फॉलोइंग सेक्शन शैल mutatis mutandis apply to a foreign company. Section 71, issue of debentures. Section 92, preparation and filing of annual return. Section 128, books of account etc. to be kept by the company. Section 135, CSR. Chapter 6, registration of charges, and Chapter 14, inspection, inquiry and investigation. ये जो 4 सेक्शन है और ये 2 चैप्टर्स हैं वो लगेंगे फॉरेन कंपनी पे in respect of the business they are carrying in India. Every foreign company shall prepare and file an annual return in form FC4 along with prescribed fees within a period of 60 days from the last day of its financial year to the registrar containing the particulars as they stood on the close of the financial year. हर फॉरेन कंपनी को अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है इन फॉर्म FC4 में within 60 days from the last day of its financial year. Next is the provisions of section 128 shall apply to a foreign company to the extent of requiring it to keep at its principal place of business in India the books of accounts referred to in that section in respect to monies received and spent, sales and purchases made, and assets and liabilities in the course of or in relation to its business in India. जो भी इंडिया में बिजनेस हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी पैसा मिला या दिया गया है, सेल्स और परचेजेस जो भी किए अपने फाइनेंशियल ईयर में, और एसेट्स एंड लाइबिलिटी जो है वो उसको रिकॉर्ड करनी है अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे. The provisions of Chapter 14 shall apply to the Indian business of a foreign company as they apply to a company incorporated in India. जो चैप्टर 14 है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, वो अप्लाई होगा फॉरेन कंपनी के ओनली इंडियन बिजनेस पे, जैसे कि एक नॉर्मल इंडियन कंपनी के बिजनेस पे लगता है प्रोविजन. नेक्स्ट इज सेक्शन 385, fees for registration of documents. Fees to be paid to the registrar for registering any document relating to a foreign company shall be such as provided in the company's registration offices and fees rules 2014. Next is section 386, interpretation. For the purposes of the foregoing provisions of this chapter, the expression certified means certified in the prescribed manner to be a true copy or a correct translation. हमने सेक्शन 380 में पढ़ा था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को सबमिट होंगे वो ट्रू कॉपी होनी चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के और करेक्टली ट्रांसलेटेड होनी चाहिए अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो. अब हम देख लेते हैं ट्रू कॉपी और करेक्ट ट्रांसलेशन का मतलब होता क्या एग्जैक्टली, जो कि डिफाइंड है रूल 9 और 10 में. रूल 10 talks about authentication of translated documents.
All the documents required to be filed with the registrar by a foreign company shall be in English language, and where any such document is not in English language, there shall be attached a translation thereof in English, duly certified to be correct in the manner given in these rules. Where any such translation is made outside India, it shall be authenticated by the signature and the seal, if any, of the official having custody of the original, or a notary public of the country or part of the country where the company is incorporated. इसका मतलब कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो रहा है in English language outside India, then it shall be authenticated by a signature and the seal, if available, of the official having custody of the original documents या फिर notary public of the country where the company is incorporated. Next is, where such translation is made within India, it shall be authenticated by an advocate, attorney or pleader entitled to appear before any high court, or an affidavit of a competent person having, in the opinion of the registrar, an adequate knowledge of the language of the original and of English. So कोई डॉक्यूमेंट इंडिया में ट्रांसलेट हो रहा है तो फिर वो ऑथेंटिकेट किया जाएगा बाय एन एडवोकेट, अटर्नी या फिर प्लीडर के द्वारा, जो कि एंटाइटल है टू अपीयर बिफोर एनी हाई कोर्ट, या फिर वो ऑथेंटिकेट किया जाएगा बाय एन एफिडेविट ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन, जो रजिस्ट्रार को लगता है कि उसके पास एडुकेट नॉलेज है ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज एंड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. दैट्स इट. Next is, director in relation to a foreign company includes any person in accordance with whose directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. तो डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फॉरेन कंपनी में वो सारे पर्सन इंक्लूड हो जाएंगे जिनकी डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस पे फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर्स अकस्टम टू एक्ट है. मतलब कि अगर कोई बाहर का इंसान है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने डिसीजन या इंस्ट्रक्शन से कि फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वही डिसीजन लेंगे जो वो इंसान कहेगा, तो फिर उसको भी हम डायरेक्टर्स का पार्ट मान लेंगे. एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड अ शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस. अगर फॉरेन कंपनी का कोई शेयर ट्रांसफर ऑफिस है या शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है इन इंडिया तो उसको भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस में कंसिडर करेंगे. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 387, dating of prospectus and particulars to be contained therein. No person shall issue, circulate or distribute in India any prospectus offering to subscribe for securities of a company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established, or when formed will or will not establish a place of business in India, unless the prospectus is dated and signed. तो कोई भी पर्सन इंडिया में इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता कोई भी प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी. इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है या होने वाली है आउटसाइड इंडिया, या फिर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या नहीं है. बस कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा जब तक वो डेटेड और साइन दोनों नहीं है. और भी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है जो कंप्लाई करनी पड़ेंगी बिफोर द इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस. फर्स्ट इज, it should contain the particulars with respect to the following matters, namely the instrument constituting or defining the constitution of the company, जैसे कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, enactments or provisions by or under which the incorporation of the company was effected, जिस भी एक्ट के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसकी डिटेल्स भी डिस्क्लोज करनी है. The address in India where the said instrument, enactments or provisions or copy thereof, and if the same are not in the English language, a certified translation thereof in English language can be inspected. कहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं इंडिया में, उसका एड्रेस भी प्रोवाइड करना है. The date on which and the country in which the company would be or was incorporated. जिस भी कंट्री में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है या होने वाली है उसकी डेट और कंट्री का नाम आपको प्रोवाइड करना है. Whether the company has established a place of business in India, and if so, the address of its principal place of business. And secondly, states the matters specified under section 26 that are the matters to be stated in the prospectus. Provided that points 1, 2 and 3 of point A shall not apply in the case of a prospectus issued more than 2 years after the date at which the company is entitled to commence the business. इसका मतलब पॉइंट्स 1, 2 और 3 ऐसी फॉरेन कंपनीज पर अप्लाई नहीं होगा जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही हैं आफ्टर 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इट्स बिजनेस. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. एग्जांपल नंबर 4, मिल्क कंपनी LLC, a company incorporated in Dubai on 28th April 2017.
Milk Company LLC has established a place of business in Mumbai in the year 2020. Now, the place of business in India proposes to offer subscription to securities of Milk Company LLC. Now, the place of business in India, before going with the subscription, will have to file a prospectus duly dated and signed, and the prospectus shall not be required to contain the particulars mentioned in point 1, 2, and 3 of point A, as the prospectus will getting issued after a period of more than 2 years since the Milk Company LLC has commenced its business. तो सिंपली मिड कंपनी एलएलसी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है और तभी उसने अपना बिजनेस कमेंस किया होगा। तो उसके 3 साल बाद इन द ईयर 2020 में वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, तो उस पे पॉइंट्स 1, 2 और 3 एप्लीकेबल नहीं होंगे। Any condition requiring or binding an applicant for securities to waive compliance with any requirement imposed by virtue of Section 387(1) or purporting to impute him with notice of any contract, documents, or matter not specifically referred to in the prospectus shall be void. अगर प्रोस्पेक्टस में ऐसी कोई भी कंडीशन है जिससे सेक्शन 387 की किसी रिक्वायरमेंट का वेवर हो रहा है या फिर एप्लीकेंट को बाइंड किया जा रहा है किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट या मैटर्स से जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है प्रोस्पेक्टस में, तो वो सारी कंडीशंस और बाइंडिंग इफेक्ट वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज no person shall issue to any person in India a form of application for securities of such a company or intended company as mentioned in section 387(1) unless the form is issued with a prospectus which complies with the provisions of this chapter and such issue does not contravene the provisions of section 388. ये बस सिंपली ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन एक फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज इशू नहीं करेगा किसी भी पर्सन को इन इंडिया until and unless that form is issued with the prospectus. इसका एक एक्सेप्शन भी है if it is shown that the form of application was issued in connection with a bona fide invitation to a person to enter into an underwriting agreement with respect to securities. अगर वो पर्सन कोई अंडरराइटिंग अग्रीमेंट के लिए कोई इन्विटेशन दे रहा है किसी पर्सन को, तो फिर वो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज ऐसे इशू कर सकता है बिना प्रोस्पेक्टस के। Next is the provisions of section 387 shall not apply to the issue to existing members or debenture holders of a company of a prospectus, a form of application relating to securities of a company, whether an applicant for securities will or will not have the right to renounce in favor of other persons. अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर्स को इशू कर रही है कोई प्रोस्पेक्टस या फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज, तो उस पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 387 अप्लाई नहीं होंगे एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 387 shall not apply in respect of issue of prospectus dealing with offer of securities which are uniform in all respect with securities previously issued and such previously issued securities are listed on a recognized stock exchange. However, provisions relating to dating of prospectus shall continue to apply. The provisions of section 387 उन prospectus पे भी नहीं लगेंगे जो इशू किए जा रहे हैं फॉर सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, और वो सिमिलर सिक्योरिटीज हम पहले भी इशू कर चुके हैं। However, उस prospectus पे डेटिंग एंड सिग्नेचर वाले provisions अप्लाई होंगे। Next is section 388 provision as to experts consent and allotment. No person shall issue, circulate, or distribute in India any prospectus offering for subscription in securities of a company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or when formed will or will not establish a place of business in India. तो कोई भी पर्सन इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा ऐसा प्रोस्पेक्टस फॉर ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है या होने वाली है, और जब वो इनकॉर्पोरेट होगी तो वो अपना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में एस्टैब्लिश करेगी या नहीं करेगी, वो ऐसा कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी जब तक if where the prospectus includes a statement purporting to be made by an expert, he has not given or has before delivery of the prospectus of registration withdrawn his written consent to the issue of the prospectus with a statement included in the form or context in which it is included, or there does not appear in the prospectus a statement that he has given and has not withdrawn his consent as aforesaid. इसका मतलब कि कोई भी इंसान ऐसे प्रोस्पेक्टस इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा इंडिया में प्रोस्पेक्टस जब तक कि उसके अंदर एक एक्सपर्ट का कंसेंट नहीं है, और इफ द प्रोस्पेक्टस डज नॉट हैव द इफेक्ट वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड इन परसुएंस thereof of rendering all the persons concerned bound by the provisions of section 33 issue of application forms of securities and section 40 securities to be dealt with the stock exchanges so far as applicable.
For the purpose of this section, a statement shall be deemed to be included in a prospectus if it is contained in any report or memorandum appearing on the face thereof or by reference incorporated therein और issued therewith. तो अगर prospectus में ऐसे किसी document का reference include किया गया है तो ऐसा deem किया जाएगा कि वो सारी information prospectus में duly covered है. अब पढ़ते हैं सेक्शन 389 जो बोलता है कि कोई भी prospectus इशू करने से पहले आपको वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास. No person shall issue, circulate, or distribute in India any prospectus offering for subscription in securities of a company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established, or when formed will or will not establish a place of business in India, unless before the issue, circulation, or distribution of the prospectus in India. First, a copy thereof certified by the chairperson of the company and two other directors of the company as having been approved by a resolution of the managing body has been delivered for registration to the registrar. मतलब कि prospectus को 3 लोग certify करेंगे, एक chairperson और 2 other directors of the company जो भी managing body approve करेगी और फिर उसको registration के लिए दे दिया जाएगा registrar के पास. Second, the prospectus states on the face of it that a copy has been so delivered. मतलब जो भी prospectus जनरल पब्लिक को इशू करेंगे उसके फेस पे लिखा होना चाहिए कि ये ड्यूली रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार के पास. Third, there is endorsed on or attached to the copy any consent to the issue of the prospectus required by section 388 and such document has been prescribed. 388 में भी हमने पढ़ा था ना कि एक एक्सपर्ट का कंसेंट लगाना होता है तो वो भी prospectus के साथ इशू किया जाएगा. और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोस्पेक्टस के साथ अनेक्स किए जाएंगे और ये रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड हैं. द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी अनेक्स टू द प्रोस्पेक्टस. मेनली क्या क्या देना है? कंसेंट टू द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी पर्सन एज एन एक्सपर्ट जो भी सेक्शन 388 में हमने पढ़ा. अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर and in case of a contract not reduced into a writing, a memorandum giving full particulars thereof. जो भी आपने मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी आपको अनेक्स करनी है. अगर उनके साथ कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है तो एक मेमोरेंडम बनाना है जिसके अंदर सारे पर्टिकुलर्स होंगे कि किसको अपॉइंट किया है, कितने टर्म पीरियड के लिए अपॉइंट किया है, उनकी हिस्ट्री, सब कुछ उसमें एक मेमोरेंडम की तरह आपको एक फिलअप करके देना है. A copy of any other material contracts not entered in the ordinary course of business but entered within 2 preceding financial years. तो पिछले 2 सालों में जितने भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किए हैं जो कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है उनकी कॉपी भी आपको अनेक्स करनी है प्रोस्पेक्टस के साथ. एक अंडरराइटिंग का अग्रीमेंट देना है एंड अ पावर ऑफ अटॉर्नी इफ प्रोस्पेक्टस इज साइन थ्रू ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ डायरेक्टर्स. अगर डायरेक्टर्स खुद प्रोस्पेक्टस साइन नहीं कर रहे हैं, जो 2 डायरेक्टर्स थे, तो आपको अपने एजेंट को जो आप ऑथराइज कर रहे हो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी अनेक्स करनी है प्रोस्पेक्टस के साथ. अब पढ़ते हैं सेक्शन 390 ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स. बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए, सिर्फ एक बार रीड कर लेते हैं. इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स क्रिएटेड बाय अ डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया and authorized by a company incorporated outside India making an issue of such depository receipts. No company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or may not establish any place of business in India, shall make an issue of IDRs unless it complies with the conditions mentioned under this rule. In addition to the SEBI issue of capital and disclosure requirements regulation 2009 and any directions issued by the RBI of India. तो इसमें सिर्फ यही कहा है कि जो भी सेबी और आरबीआई गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इशू करेगी उससे कंप्लाई करना है आइडियाज इशू करने से पहले. एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 15 कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशन. Section 234 of the Companies Act 2013 deals with merger or amalgamation of company with a foreign company. Section 234(1) states that the provision of Chapter 15, unless otherwise provided under any other law for the time being in force, shall apply mutatis mutandis to schemes or mergers and amalgamations between companies registered under this Act and companies incorporated in the jurisdiction of such countries as may be notified from time to time by the central government, provided that the central government may make rules in consultation with the RBI in connection with mergers and amalgamations provided under this section. Section 234(2) states that subject to the provisions of any other law for the time being in force, a foreign company
may, with the prior approval of the RBI, merge into a company registered under this Act or vice versa, and the terms and conditions of the scheme of merger may provide, among other things, for the payment of consideration to the shareholders of the merging company in cash, in depository receipts, or partly in cash or partly in depository receipts, as the case may be, as per the scheme to be drawn for the purpose. Next is Section 391, application of Sections 34 to 36 and Chapter 20. Section 34 डील करता है criminal liability for misstatement in the prospectus and Section 35 डील करता है civil liability for misstatement in the prospectus. ये दोनों सेक्शन की डिटेल्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा दूंगी कि इसका कंटेंट क्या है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार इसको टेस्ट किया जाता है. Section 36 deals with the punishment for fraudulently inducing persons to invest money. एक बार देख लेते हैं सेक्शन 34 और 35 क्या कहते हैं. Section 34, criminal liability for misstatements in the prospectus. Where prospectus issued, circulated or distributed under this chapter includes any statement which is untrue or misleading in form or context in which it is included, or where any inclusion or omission of any matter is likely to mislead any person who authorizes the issue of such prospectus shall be liable under Section 34, provided that nothing in this section shall apply to a person if he proves that such statement or omission was immaterial and that he had reasonable grounds to believe and did up to the time of issue of the prospectus believe that the statement was true or the inclusion or omission was necessary. मतलब कि अगर prospectus issue हुआ है और उसके अंदर कोई भी untrue या misleading statement है, तो every person who authorizes the issue of such prospectus shall be liable under Section 34. और ये Section 34 अप्लाई नहीं होगा अगर वो पर्सन प्रूव कर देता है कि वो जो स्टेटमेंट ओमिट हुआ है या इंक्लूड हुआ है वो बिल्कुल इमटेरियल है. अब बढ़ते हैं सेक्शन 35. सेक्शन 35 बात करता है सिविल लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस. इन दोनों सेक्शंस में डिफरेंस ये है कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो तब लगती है जब आप कोई मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हो, और सिविल लाइबिलिटी कब आती है जब उस प्रोस्पेक्टस को बेस बना के जनरल पब्लिक वो सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर लेती है. तो पढ़ते हैं सेक्शन 35. Where a person has subscribed for securities of a company acting on any statement included or the inclusion or omission of any matter in the prospectus which is misleading and has sustained any loss or damage as a consequence thereof, the company and every person who is a director of the company at the time of issue of the prospectus has authorized himself to be named and is named in the prospectus as a director of the company or has agreed to become such director either immediately or after an interval of time, is a promoter of the company, has authorized the issue of such prospectus and is an expert referred to in subsection 5 of section 26 shall be liable to pay compensation to every person who has sustained any loss or damage. तो जो भी जनरल पब्लिक को लॉस या डैमेज हुआ होगा ये पांचों लोग उसके लिए लाइबल होंगे. कौन कौन? डायरेक्टर, जिस भी इंसान ने ऑथराइज किया है अपने आप को एज नेम करना इन द प्रोस्पेक्टस द डायरेक्टर, प्रमोटर और जो भी एक्सपर्ट है जिसने ऑथराइज किया प्रोस्पेक्टस का इशू, वो सब लाइबल होंगे फॉर द डैमेज. वापस आ जाते हैं सेक्शन 391 पे. तो सेक्शन 34, 35 और 36 लगेंगे फॉर इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस या फिर आईडीआर अगर फॉरेन कंपनी इशू कर रही है तो. Next is, subject to the provisions of Section 376, the provisions of Chapter 20 shall apply mutatis mutandis for closure of the place of business of a foreign company in India as if it were a company incorporated in India in case of such foreign company has raised money through offer or issue of securities under this chapter which have not been repaid or redeemed. तो भले ही फॉरेन कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है, कंपनीज एक्ट पावर देता है ट्रिब्यूनल को कि वो उसका वाइंड अप कर सकता है अगर उसने जनरल पब्लिक से कोई पैसे लिए हुए हैं और रिडीम नहीं किए हैं और वो डिसॉल्व हो गई है तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो उसको वाइंड अप कर सकता है. वाइंड अप के थ्रू जो भी उनके एसेट्स से रियलाइजेशन होगा वो उसके थ्रू पे कर सकता है. नेक्स्ट है सेक्शन 392, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. अगर फॉरेन कंपनी चैप्टर 22 का कोई भी प्रोविजन का डिफॉल्ट करती है तो उस पर फाइन लगेगा 1 लाख रुपीज से लेके 3 लाख रुपीज तक, और एडिशनल फाइन भी लग सकता है 50,000 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज. एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द फॉरेन कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, उन पर फाइन लगेगा 25,000 रुपीज विच में एक्सटेंड टू रुपीज 5 लाख. Next is section 393, company's failure to comply with the provisions of this chapter not to affect validity of contracts, etc.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। Any failure by a company to comply with the provisions of Chapter 22 of the Companies Act 2013 shall not affect the validity of any contract, dealing, or transaction entered into by the company or its liability to be sued in respect thereof. However, the foreign company shall not be entitled to bring any suit, claim any set-off, make any counter-claim, or institute any legal proceedings in respect of any such contract, dealing, or transaction until the company has complied with the provisions of Companies Act 2013 applicable to it. मान लो कि फॉरेन कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल करने थे रजिस्ट्रार के पास, लेकिन उसने नहीं किए, तो जब तक वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं कर लेता तब तक वो किसी भी काउंटर पार्टी को सू नहीं कर सकता, लेकिन वो काउंटर पार्टी फॉरेन कंपनी को सू कर सकती है। एंड द फॉरेन कंपनी इज लायबल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, डीलिंग और ट्रांजैक्शंस एंटर्ड बाय इट विद द अदर काउंटर पार्टीज। और नेक्स्ट है सेक्शन 393A एग्जेम्पशंस अंडर दिस चैप्टर, जो बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी नोटिफिकेशन के थ्रू किसी फॉरेन कंपनी को सारे प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर 22 या कुछ प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा नोटिफिकेशन ले आया है जहाँ पे वो फॉरेन कंपनीज को और IFSCs में रजिस्टर्ड कंपनीज को सेक्शन 387 टू 392 बोथ इंक्लूसिव से एग्जेम्प्ट कर रहा है। और इसी के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। ये नोट्स आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं नीचे दिए गए गूगल ड्राइव लिंक से। थैंक यू।